Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. तो लास्ट वीडियो में हमने फाइंड द ऑर्डर्स यानी कि एलिमेंट्स का ऑर्डर देखे थे, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखे थे। अभी इस वीडियो में हम सब ग्रुप फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट देखने वाले हैं। सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, उसका डेफिनेशन, उसके ऊपर जो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स और थ्योरम्स के ऊपर जो एग्जांपल्स है, तो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट, सब ग्रुप क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, पहले जान लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, लेट G star be a group. A non-empty subset H of G is called subgroup of G. Non-empty, important है ये non-empty subset H of G is called subgroup of G if H is a group by itself under the same operation star as in G. Itself, group by itself, and we write H is subgroup of G. It is read as H is a subgroup of G, and उसका denotation है H is less than G. If H is not subgroup of G, then we write H is not less than or equals to G. यानी कि H is not belongs to G. If it is not subgroup of G, then we write H is not G. तो देखो सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, फिर से देखते हैं। लेट G स्टार बी अ ग्रुप, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ G इज कॉल्ड subgroup of G if H is a group by itself under the same operation star as in G, and we write H is subgroup of G, and if it is not subgroup of G, then we write H is not less than G. तो ये हुआ उसका डेफिनेशन। तो उसके ऊपर थ्योरम्स है, थ्योरम्स पहले देखते हैं हम। सो फर्स्ट थ्योरम है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में फर्स्ट थ्योरम है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, उसमें फर्स्ट है थ्योरम, थ्योरम फर्स्ट है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। थ्योरम क्या है देखो पहले, लेट G star be a group, a subset of G is a subgroup of G if and only if for every AB belongs to H implies A into B inverse belongs to H. तो प्रूफ देखो, थ्योरम देखो क्या है, लेट G star be a group, a subset of G is a subgroup of G, a subset of G is a subgroup of G if and only if for every AB belongs to H implies AB inverse belongs to H. तो पहले देखो प्रूफ में we have to show that H is a subgroup of G. That means to show that
H is a group. To show that H is a subgroup of G, that means we have to show that H is a group. Then given क्या दिया है? A B inverse belongs to H है for every A B belongs to H. तो ये हमें प्रूफ करना है ग्रुप के लिए. तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो हमें प्रूफ करना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी में देखो, सिंस G is a group, then star is automatically associative. Then star is associative. ग्रुप है यानी कि वो एसोसिएटिव है. एंड सिंस H is subset of G, and therefore star is also associative on H. H is a subset of G, and therefore star is associative on H. Because H is a subset of G and G is the group है, तो star is automatically associative होगा. और H is a subset of G है, and then automatically star is also associative on H. Then second property हमें proof करनी है identity की. So identity में देखो, since H is not equals to non-empty set, that means pi. Let X, suppose X consider किया है elements, the X is belongs to H, then substituting A, B, which is X in our equation. A dot B inverse belongs to H. Then A dot B inverse, which is equals to X dot X inverse, which is equals to E. And E is belongs to H. And therefore E is belongs to H. Then identity exists in H. Identity exists in H. So, ये second property भी proof हुई identity की. Then third is the inverse. Inverse में देखो, let X is belongs to H है, then put A is equals to E and B is equals to X in our equation. A dot B inverse belongs to H. Then A dot B inverse, which is equals to A की जगह पे A डालना है, B की जगह पे X डालना है. तो E dot X inverse क्या होगा? X inverse होगा. और X inverse is also belongs to H होगा. That means X is exist in H. So let AB belongs to H, B inverse is also belongs to H. Then put A is equals to A and B is equals to B inverse. So A की जगह पे A डालना है और B की जगह पे B inverse डालना है. So A into B inverse, which is belongs to H, that means A into B inverse, which is equals to A into B inverse of inverse, that means A into B आएगा. A into B आएगा, which is also belongs to H आएगा. And therefore star is binary operation on H. Star is the binary operation on H, and H is the subgroup of, therefore H is a subgroup of G under same binary operation of G. So ये थ्योरम आपको समझ में आया? तो पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो थ्योरम क्या है. लेट G स्टार बी अ ग्रुप है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी बिलोंग्स टू H implies A B inverse belongs to H. So we have to show that H is a subgroup of G, and to that means show that H is a group itself. So is subgroup की definition है. So given things A B inverse H belongs to H for every A B belongs to H. Then associativity में since G is the group A, therefore star is the associative.
and H is a subgroup of G है तो then automatically star is also associated in H. Identity में देखो क्या किया है, since H is not equals to non-empty set, then X is belongs to H. Then substitute value the AB is equals to X. Then A की जगह पे X डाला, B की जगह पे X डाला, तो इसका आंसर X inverse E. तो E is belongs to H, that means identity exists. इनवर्स में क्या किया है हमने, A की जगह पे E डाला, B की जगह पे X डाला, तो E dot X inverse, that means X inverse आया. So X inverse is also belongs to H. Next, again we have to put A equal to A and B equal to B inverse. Then B inverse of inverse, that means AB. AB is also belongs to H, and that means star is the binary operation on H. तो इसके ऊपर जो एग्जांपल है वो देखते हैं. ये थ्योरम के ऊपर जो एक एग्जांपल है देखते हैं. Examples. Let G be an abelian group with identity element E. Let H is equals to X belongs to G for every X is square equals to E. Then show that H is a subgroup of G. सॉल्यूशन देखो, पहले एग्जांपल फिर से देखते हैं क्या है. देखो, let G be an abelian group with identity element E. Let H is equals to X belongs to G, X square equal to E. Show that H is a subgroup of G. Then we have to prove H is a subgroup of G. To show that, क्या प्रूफ करना है हमें, H is a subgroup of G. That means to show that H is non-empty set, that is E belongs to H. Consider two elements A, B belongs to H. Then A star B inverse is also belongs to H. And given condition क्या है, H is equals to X belongs to G for every X square is equals to E. And G is be an abelian group. Abelian group with identity element E. With identity element E. And therefore E square is equals to E dot E. That means E आएगा. और E is also belongs to H आएगा. Because since H is not equals to 5. Then AB is belongs to H. Then A square is E or B square is E. Therefore A star B inverse is belongs to H आएगा. That means A star B inverse square which is equals to E. यानी कि A star B inverse square इसको स्प्लिट किया तो ये आएगा, और ये A स्टार, ये एक ब्रैकेट में लिखते हैं स्टार B इनवर्स बिकॉज एसोसिएटिविटी. और इसको हम चेंज किया तो भी चलेगा बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिविटी. अगेन A इंटू ब्रैकेट निकाला तो ये आएगा. देन A स्क्वायर स्टार B इनवर्स स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर की वैल्यू E है और B इनवर्स आएगा. देन E इंटू E इनवर्स E आएगा. Therefore A star B inverse square is equals to E आएगा.
and therefore A star B inverse which is belongs to H because identity element is exist, and hence by first step यानी कि one step subgroup test H is a subgroup of G. Because it contains one element, that means it is belongs to H because H is a non-empty set. Non-empty set, that means in H there is existent elements, not null set. And there exist an elements E, and therefore it is belongs to H, and therefore H is a subgroup of G. तो ये हुआ इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. थ्योरम 2, टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट. इसका थ्योरम है लेट G be a group and H is a subset of G where H is not equals to pi, then H is a subgroup of G if and only if first A dot B belongs to H for every AB belongs to H. Second, A inverse belongs to H for every A belongs to H. तो प्रूफ देखो. Let H be subset of G and H is not equals to 5. Then first part proof करते हैं. Part first, let H be subgroup of G. Then H itself group. Itself a group. Because H is a subgroup of G, then H is itself a group. Then AB belongs to H. Let AB belongs to H. Then A dot B is also belongs to H. It is a closure property. Yeah, we have to write here closure property. And if A is belongs to H, then A inverse is also belongs to H. It is existence of inverse. It is the existence of inverse. And therefore, this condition 1 and condition 2 are satisfied. Condition 1 and condition 2 are satisfied. अभी सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है. अगर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूफ होता है, then we have to prove that H is a subgroup of G. That means conversely हमें प्रूफ करना है. Suppose condition 1 and 2 are satisfied for H, then we have to prove that we have to
prove that H is subgroup of G. इजी थ्योरम है, एग्जाम में पूछते हैं ये थ्योरम. दैट मीन्स H itself forms a group. And let AB belongs to H है, यानी कि A dot B is also belongs to H आएगा by condition first. Okay, and here also closure property is satisfied. Since H is not equals to null set, there exists A belongs to H, A inverse is belongs to H, and A dot A inverse belongs to H. And for A dot A inverse, which is equals to E, which is belongs to H. ये हुआ इनवर्स के लिए. And thus identity element exists. Identity element exists in H. Associativity is also inherited by H. And therefore H is group itself. H is a group itself. That means H is a subset of G, and therefore H is a subgroup of G. Subgroup of G. जो ये टू स्टेप थ्योरम है वो हमने टू टाइप से प्रूफ किया है. पार्ट 1 और पार्ट टू में हमने कॉन्वर्स प्रूफ किया है. पार्ट 1 में देखो क्या किया है. पार्ट 1 में हमें ये दो कंडीशंस दिए हैं और हमें प्रूफ करना है H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, यानी कि इट इज अ सब ग्रुप ऑफ G. एंड पार्ट 2 में क्या किया, हमने कॉन्वर्स किया है. अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो हमें H इज अ सब ग्रुप ऑफ G प्रूफ करना है. तो ये दो कंडीशंस लेके हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एसोसिएटिविटी प्रूफ किया है, यानी कि ये सब ग्रुप. तो ये हुआ हमारा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं. इंटरसेक्शन का है थ्योरम. दो टाइप से पूछते हैं ये थ्योरम एग्जाम में. दोनों थ्योरम में आपको बताती हूँ. इंटरसेक्शन ऑफ एनी two subgroups of a group is again a subgroup. Or if H and K are any two subgroups of a group G, then H intersection K is also subgroup of G. So H intersection K, intersection of any two subgroup of a group G is again a subgroup. And if H and K are the two subgroup of G, then H intersection K is also the subgroup of G. तो इसका प्रूफ देखो, इजी है ये थ्योरम. Since H and K are subgroup of G, suppose H and K लिया है हमने, H and K are subgroup of G, and therefore
E is belongs to H, E is also belongs to K. And for E is belongs to H intersection K. Because H intersection K, since H intersection K is non-empty. Now, if suppose A or B is belongs to H intersection K, then AB belongs to K, also AB belongs to H. AB inverse is also belongs to K, AB inverse is also belongs to H. And therefore AB inverse is also belongs to H intersection K. And therefore H intersection K is subgroup of G. And hence proof. ये जो थ्योरम है यहाँ पे हमने 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट का थ्योरम यूज किया है. 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट, ये थ्योरम यूज करके हमने ये इंटरसेक्शन का पार्ट प्रूफ किया है. सेम यूनियन के लिए थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4. यूनियन के लिए देखो, यूनियन ऑफ 2 सबग्रुप is not a subgroup, or show that union of 2 subgroups need not be proved. इसका प्रूफ देखो, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों टाइप की थ्योरम्स एग्जाम में पूछते हैं. इजी थ्योरम्स है. सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके हम ये सॉल्व करते हैं. एक थ्योरम, सपोज वी हैव we have 2z and 3z are subgroup of z plus, but 2z union 3z cannot be subgroup of z and plus. 2z and 3z are the subgroup, but 2z union 3z are not subgroup. This is because 2 is belongs to 2z, then 2 is also belongs to 2z union 3z. 3 is belongs to 3z, then 3 is also belongs to 2z union 3z. बट यहाँ पे देखो 2 plus 3 कितना आएगा, 5 आएगा. बट 5 is not in 2z or not in 3z. That means 5 is not belongs to 2z union 3z, and therefore 2z union 3z is not closed under addition और यूनियन. बहुत इजी है. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4. every subgroup of an Abelian group
Abelian group is abelian. So प्रूफ में देखो, ये 2 और 3 लाइंस का प्रूफ है, बहुत इजी है. देखो यहाँ पे क्या करना है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ अबेलियन, ये हमें प्रूफ करना है. सो लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप. अबेलियन ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, कम्यूटेटिविटी, ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है. So G be an abelian group and H is a subgroup of G, then AB belongs to H. Then AB equals to BA, also AB belongs to H. G is abelian, H is also abelian. तो ये हुआ उसका प्रूफ. ये क्लास थ्योरम है, क्लास थ्योरम देखते हैं. ये भी एग्जाम में पूछते हैं. थ्योरम नंबर 5 और 6 whatever. Finite subgroup test. Finite subgroup test. थ्योरम देखो क्या है, let G star be finite group and H be subset of G, then H is subgroup of G if and only if for any AB belongs to H, AB belongs to H. इसमें प्रूफ देखो, तो थ्योरम क्या है पहले देखो, लेट G star be a finite group and H be a subset of G, H is a subset of G, then H is a subgroup of G if and only for any A comma B belongs to H, AB belongs to H. तो प्रूफ में देखो, if H is a subgroup of G, if H is subgroup of G, then by definition, subgroup की definition क्या है, H itself is a group. H itself is a group. Okay, and for every AB belongs to H, A into B is also belongs to H. Conversely, we have to prove. थ्योरम है तो उसका कॉन्वर्स भी हमें प्रूफ करना है. सपोज H is a subset of G, H is subset of G and AB belongs to H for every AB belongs to H and therefore H is closed. Okay. Then there exists a positive integer. When there exists a positive integer m such that a raised to m क्या आएगा, e आएगा, and a raised to m e, that means which is belongs to h आएगा, and that is identities belongs to h. Identities belongs to h, that means h is a non-empty set. Then e is equals to a raised to m, that means a raised to m minus 1 star e, and a raised to m minus 1 is inverse of a, inverse of a, and a raised to m minus 1 is also belongs to
H, and thus H is subgroup of G. And hence ये जो थ्योरम है ये दोनों टाइप से हमें प्रूफ करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दैट मीन्स कॉन्वर्स, उसका भी हमें प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम देखो, ये थ्योरम ने हमने क्या किया है, let G star be a finite group and H is a subset of G, then H is a subgroup of G if and only if for any AB belongs to H, AB belongs to H. तो यहाँ पे देखो, if H is a subgroup of G, then by definition H is itself a group. Then for every A comma B belongs to H, AB belongs to H. इसका कॉन्वर्स देखो, H is subset of G and AB belongs to H. For every AB belongs to H, H is closed. And where exists positive integer, suppose m लिया है हमने, तो a raised to m is e, and e is the identity elements which is belongs to H, and H is the non-empty set. Suppose e is equals to a raised to m minus 1 star a. Therefore, a raised to m minus 1 is the inverse of a, and it is a subgroup of G. तो ये फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट का प्रूफ हुआ है। तो देखो, दो एग्जांपल्स लेते हैं हम और इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। एग्जांपल्स पहले देखो, एग्जांपल, prove that 2z which is equals to 2n for every n belongs to z is a subgroup of z with respect to addition. तो ये हमें प्रूफ करना है, एग्जांपल प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या है, देखो क्वेश्चन पहले रीड करो। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट 2z is equals to 2n for every n belongs to z is a subgroup of z with respect to addition. तो देखो वन बाय वन कैसे सॉल्व किया जा करते हैं। इसमें हम 2 स्टेप बाय यूजिंग 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट, ये थ्योरम यूज करेंगे। तो फर्स्ट देखो, 0 लिया है हमने, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, दैट मीन्स 0 विच इज बिलोंग्स टू z आएगा, एंड हेंस 2z is non-empty. Second, let AB belongs to Z, then A is equals to suppose 2m लिया है और B is equals to 2n लिया है, for Mn is which is belongs to 2Z, then A star B which is equals to, यहाँ पे दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी कि a प्लस बी एडिशन करेंगे हम, 2m प्लस 2n करेंगे, इसमें से हम 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे m प्लस n आ जाएगा। सिंस m और n इज बिलोंग्स टू z है, तो m प्लस n भी बिलोंग्स टू z आएगा, यानी कि a स्टार b विच इज बिलोंग्स टू 2 इंटू z। तो ये हुआ सेकेंड प्रूफ। थर्ड, लेट a इज इक्वल्स टू 2m लिया है और m इज बिलोंग्स टू z है, तो 2m विच इज बिलोंग्स टू 2z आएगा। Also
minus 2m belongs to 2z where minus m is also belongs to z. तो इसका एडिशन देखो 2m minus 2m which is equals to 2m minus 2m, तो इसका आंसर आएगा 0. यानी कि इनवर्स ऑफ एवरी, therefore इनवर्स of every element of 2z exists, and therefore 2z is subgroup of z with respect to addition. With respect to addition. तो ये हुआ एडिशन का एग्जांपल. एक एग्जांपल लास्ट का एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. प्रूव दैट h is equals to 0 bar, 4 bar, 8 bar is a subgroup of Z12 under addition modulo 12. तो इसमें सॉल्यूशन देखो. h is equals to given h is equals to 0 bar, 4 bar, 8 bar is a finite subset. Is a finite subset of Z12. Let we prepare composition table. Then composition table देखो क्या आएगा. यहाँ पे एडिशन है तो 0 बार, 4 बार, 8 बार आएगा. यहाँ पे 0 बार, 4 बार और 8 बार आएगा. एडिशन है 0 बार प्लस 0 बार 0 बार, 0 बार प्लस 4 बार, 0 बार प्लस 8 बार. यहाँ पे 4 बार, 4 बार प्लस 4 बार 8 बार, 8 बार और 4 plus 8 12 बार, 12 बार which is the modulo 12 which is congruent, and then remainder will be 0. यहाँ पे देखो 8 बार प्लस 0 बार 8 बार, 8 बार प्लस 4 और 12 बार, तो इसका आंसर 0 बिकॉज 12 से 12 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है. 8 plus 8 16, 16 को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आएगा. तो यहाँ पे देखो ईच रो में 0 बार, 4 बार, 8 बार है, 4 बार, 8 बार, 0 बार, 8 बार, 0 बार, 4 बार है. They exist in H. All elements are exist in H. All row contains 0 bar, 4 bar, 8 bar, and therefore H is closed under addition. एलिमेंट्स आते हैं कि नहीं वो देखना है हमें. अगर ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है तो वो इट इज अ क्लोज्ड अंडर द एडिशन. तो उसका आंसर ये आएगा. तो ये हुआ हमारे इस एग्जांपल का प्रूफ. तो इसमें हम इस वीडियो में हमने टोटल 5 थ्योरम देखे हैं. 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड 5th वन इज द फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट. उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल्स भी देखे हैं. अभी वीडियो को मैं अभी स्टॉप करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.